Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, Sadaf. How are you? Assalamualaikum. I'm very well, thank you. Today we have a very, very exciting, very talented guest for you, Sadaf Naeem. Sadaf Naeem is a visual artist who is Lahore based. She is a graduate of the National College of Arts, Lahore. She earned her BFA from there. Currently, she's doing her master's at the University of Hawaii, Manoa. And she is joining us from Hawaii right now. How are things in Hawaii, Sadaf? Things are like great, and I must say, एक बहुत ही similar kind of aspect है हवाई का इस्लामाबाद से. It's very similar vibe. अच्छा, So that's yeah. wonderful. तो फिर तो बहुत बहुत मजे की जगह होगी. जी जी. She is a board member at Studio RM in Lahore, and she'll tell us more about all the wonderful things that she does at Studio RM. Other than that, she is also an art educator. She also has a history of teaching art, and her work is very exciting. हम आप लोगों के साथ share कर रहे हैं. So, with this brief introduction, Sadaf, welcome to my show, and thank you for joining me. Yeah. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity where I can, share my thoughts and my work with you. तो आपका इंटरेस्ट आर्ट में कैसे डेवलप हुआ और कब हुआ? Actually, I think वही कहानी है जो बहुत सारे और लोगों की भी होती है. From my childhood, early childhood, I used to like drawing and painting a lot, and I was the बहनों में youngest थी, तो और इतनी talkative नहीं थी, तो my way out was that I used to do drawings and paintings. So I think ठीक वहीं से वो interest develop हुआ. ठीक अच्छा तो घर में कौन कौन था? बहनें कितनी थी? Oh, 4 बहनें हैं हम and 2 भाई हैं. So Yes. you have other artists at home other than Uh, your... नहीं, I'm the only one. Actually, मेरे जो सारे siblings हैं, we all have different kind of professions. Right. So who's the artist? Where did you inherit your amazing talent from? I don't know. I actually मैं आपको बताती हूँ. हाँ, अभी मुझे याद आया, मेरे जो हाँ. दादा थे, actually he was graduated from Mia School of Arts. It's a Ah, before partition. right. Because वो कपूरथला में रहते थे. Hmm. And my अब्बू used to tell me कि वो उनको महाराजा ने एक स्कॉलरशिप दिया था वहाँ के जो है, तो Wow. वो एक आर्किटेक्चर का डिप्लोमा करने वहाँ से लाहौर में स्कूल ऑफ आर्ट्स में आए थे. बट इसके अलावा मैं नहीं जानती बिकॉज इट्स ऑल ये सारी जो स्टोरीज है वो बहुत पुरानी हैं और बिफोर पार्टीशन की हैं, तो Hmm, इसलिए hmm, बट आई hmm. थिंक वो That's जर्म्स probably it. Right. अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए फिर कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई लाहौर में? अब मैं आ गई हूँ पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल लाहौर में, गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स स्कूल जो ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैंने अपना मैट्रिक वहाँ से किया एंड देन ठीक आई वेंट टू लाहौर कॉलेज where I did my fine arts in intermediate and then I ठीक. went here. Right. And I know that when I was a student, which was obviously a long time ago, much before you, but we did not have art education or art classes in Kinnaird. So when I was talking to you a little while ago, you were telling me कि आपके time पे भी exactly वही चीज थी, and that's why you had to opt for Lahore College. How did you Yeah. find your experience at Lahore College? It was good. Different teachers. I think
कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत इंस्पायर भी किया था, यू नो। और आई थिंक वहाँ से मुझे एक और तरह का एक्सपोजर मिला टुवर्ड्स गैलरीज एंड टुवर्ड्स प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो कि काम करते हैं, स्पेशली फीमेल यू नो आर्टिस्ट, बिकॉज जनरली राइट हम जो सुनते थे ज़्यादा फेमस गुलची सईद साहब और मतलब इन लोगों का काम जो सारे एक मेल आर्टिस्ट थे। तो लाहौर कॉलेज क्योंकि ऑल वुमेन कॉलेज है तो वहाँ से मुझे उस चीज़ का एक्सपोजर मिला कि ख़वातीन किस तरह से यू नो आर्ट की फील्ड में अपना काम कर रही हैं। राइट राइट। अच्छा, फिर एनसीए गए आप, तो what was the change all of a sudden from Lahore College, all women, and then Yeah. NCA, totally different environment? कैसा लगा आपको? Yes, it was actually a very big change for me, kind of a cultural shock because, you know, एक मुझे लगता है कि जो एक नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, साउथ एशियन फैमिलीज, हमारे रीजन की फैमिलीज, उसमें एक बहुत पैसिवनेस होती है लड़कियों में। तो Right. yeah, initially it took me a time to you know get settled वहाँ का जो भी सारा है, but I was actually more focused about my work and you know I was a good student. I can say that, you know. So मेरी कोई इतनी ज़्यादा socialization नहीं थी वहाँ पे, ठीक। इतना वो नहीं था, you know, extra curricular में मैं नहीं involved थी. I was just you know focusing on my studies at that time. राइट राइट राइट। एंड सो कोई आपके टीचर्स थे जिनको आप मेंशन करना चाहोगे, who inspired you in your 4 years there? Yes, I because मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी तो आई थिंक वहाँ पे सरकुदूस मिर्जा उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया था, स्पेशली व्हेन you know in my third year thesis से पहले it was kind of a compliment from him that he said that my paint quality is very nice and I should focus what जिसमें मैं अच्छी हूँ and I should you know focus on that direction instead of going here and there. तो आई थिंक वो एक बड़ी हेल्प होती है उस टाइम पे जब आपके टीचर आपको देख सकें कि अच्छा आपकी जो इंटरेस्ट है या आपका जो क्या सकेंगे टैलेंट है वो किस तरफ है, यू नो, एक काउंसलिंग कर सकें कि आप, आई थिंक वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Then obviously R.M. Naeem, you know, he was also there, and despite the fact that he's my husband, but I actually have learned a lot from him. Yes. Still, I'm learning, you know. So I mean, other disciplines because art, I think सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छा सा काम बना दिया. It is kind of a, it carries actually kind of a discipline. तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने R.M. से बहुत ज़्यादा सीखी हैं. How you actually have to indulge yourself fully into what you actually want to achieve. Right. अच्छा, नईम was a professor there, वो पढ़ा रहे थे उस वक्त जब आप गए हो? जी, So पढ़ा he रहे was थे, but teacher. we got married and when I was in third year तो हमारा निकाह हो गया था. Then he took him out from my you know that teaching thing. So अच्छा. yeah, then because yes. Wow, this is such an exciting story. थोड़ा सा तो शेयर करो आप मेरे साथ और ऑडियंस के साथ. नहीं, इसमें कोई उस तरह की स्टोरी नहीं है. You थर्ड know, ईयर मैंने कहा. but yes, actually मेरा जो भाई है he was friend with RM and you know उस तरह से अच्छा, एक ठीक ठीक. family friendship चीजें थी and then you know then it actually happened. And you continued your studies, right? Yes, yes. Actually, वो यही था. I think उस टाइम पे कुछ इस तरह का सीन था कि नहीं wanted to go abroad for his masters. तो मेरे अब्बा ने कहा नहीं हमने शादी तो नहीं करनी जब तक कि ग्रेजुएट नहीं कर लेती, थीसिस नहीं कर लेती. So he was very particular. He was thinking कि शायद मैं अपना you know पढ़ाई complete नहीं कर पाऊंगी if I अगर मेरी Right. शादी हो जाती है. हाँ, तो but देन हमारा निकाह हो गया था मगर आफ्टर माय थीसिस जो है वो एक प्रॉपर जो भी
शिफ्टिंग जो होती है वो भी थी. Right, right, right. Acha. But that's quite amazing, and that means that your father was also very supportive कि आप अपने Yes, education he complete was करें. very particular, and my Hmm. mother also, मेरी अम्मी जो है, Hmm. she was very particular कि हम जो सारी बहनें हैं हम अपना जो प्रोफेशनल स्टडी है वो पूरी करें, ठीक. because I think वो काफ़ी विजनरी हैं. उनका ये मानना था कि लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है. Hmm. कभी भी कोई हार्ड टाइम आता है तो दे कैन एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन. बिल्कुल. बिल्कुल, बिल्कुल. So that means that your mother has a huge role in your Yeah, success and everything that you're doing in life, yeah. Still, right? I don't know. Yeah. Mashallah, you're going to graduate from the University of Hawaii next year, right? So, and you were telling me कि आप अपने thesis के level पे अब पहुंच गए हो and you're going जी. to finish up. Yes. So let's also talk a little bit more about it अभी थोड़ी देर में. अच्छा तो ठीक है फिर आप ग्रेजुएट किए एनसीए से फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर एक्चुअली मेरा जो थीसिस था वो भी सारा उस शिफ्ट पे था जो एनसी का मेरा थीसिस था, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बड़ा चेंज होता है, व्हेन यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो Right. I mean from one house to another house and हाँ, you just need to बिल्कुल. make that house your home. तो हम्म. मेरा एक्चुअली जो थीसिस था वो इसी चीज पे था. एक जो ट्रांजिशन होता है, जो बीच के एरियाज होते हैं, how you feel about that. फिर उसके बाद they were like uh, I think after a year मेरे पास मेरा बेटा था. you know and but उस सिस्टम में जब मेरी शादी हुई तो that it was not a conventional house or system there. It was more like a studio space. Right, right. तो हमारे साथ और लोग भी रहते थे. अच्छा. एंड सो वो एक्चुअली एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग था एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी इसमें, बिकॉज वो ना चाहते भी हुए भी यू एक्चुअली फेल कि अच्छा आपने काम करना है, बिकॉज आपके सराउंडिंग में इतना सारा लोग सब काम कर रहे थे. तो आई थिंक वो एक बहुत एक किक स्टार्ट था, कि ठीक. आप अपने आप को देखते हैं कि अच्छा सब लोग काम करें तो आई आल्सो हैव टू डू. एंड देन एक बिल्कुल. extended family kind of support थी, because I remember जब मैं जाती थी किनेड में तो मेरा बेटा was around 7-8 months. So उसमें होता था कि स्टूडियो में कोई भी होता था तो मैं I used to tell him कि अच्छा इसको देख लेना, मैं 2 घंटे बाद वापस आती हूँ. That's great. तो और आई थिंक वो एक बहुत ही हेल्दी किस्म का हाँ. एक एक्सचेंज था. अच्छा तो you had your elder son और फिर उसी वक्त थोड़ी महीनों में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया किनेड में. Is that how it worked? या ठीक. So why किनेड? आपको अपना टाइम याद आया जब वहाँ कोई आर्ट टीचर्स नहीं थे और exactly. That is thing. And then Colin David, I am actually a huge fan of his work, and my husband RM, he also, and luckily because of RM I used to meet all these big names. तो फिर रुखसाना डेविड, she offered me कि इस तरह से we are doing something, and we are initiating a bachelor's department, 4 years program in Kinnaird. Right. Then I joined her team there. ठीक. And so how did you find that experience teaching in Kinnaird? Yes, actually, again, because NCA और फिर वो studio का experience, and then again to all women college, वो एक दोबारा से cultural shock नहीं कहूँगी, but it was kind of a different experience. Yeah. Right. Because जब आप लड़कों के साथ काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो you don't feel like that आप इतना feminist हैं या आपने अपना ईजल नहीं उठाना, इस तरह की चीजें. बट आई थिंक
जो ऑल वुमेन कॉलेज और स्कूल्स हैं उसमें एक थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि उनके कंपैटिटिव एक जेंडर नहीं होती शायद you know. Right, So right. it was kind of a different experience but the good one. And फर्स्ट बैच था जो मैंने वहाँ से जो ग्रेजुएट हुआ था आई taught them and they're all doing very well. You know, it was a group of 6 girls जो हमारे first batch में था and yeah, some of them are like in touch अभी भी. ठीक. And did they end up in NCA, any of them? Because Yes, the yes. ultimate They goal. They pursued did. some of them. They pursued their masters from NCA and from Punjab University. तो वो एक अच्छी professional opening उनको वहाँ से मिला. That's a great service you did, Sadaf, because I always think back on those years when I was in Kinnaird because I refused to go anywhere else and there was no art. It was just Yeah, hot. but credit goes to Ruxana David, Dr. हाँ, Ruxana David. बिल्कुल, She's बिल्कुल. principal there now, and अभी वहाँ का जो department है वो बहुत ज़्यादा flourish भी कर गया है. They have textile design department, अच्छा. including fine arts के जो भी सारे disciplines हैं. And then they're gonna start, I guess, fashion design department as well. So, Wow. it's एक बहुत अच्छी उसकी development हो रही है वहाँ पे. And I ठीक. think it's very important because we also still we have वो structures घरों में जहाँ पे parents prefer करते हैं अपनी बेटियों को to all women college. हाँ, more conservative. Yeah. बिल्कुल, Because बिल्कुल. I remember जब मैं पढ़ा रही थी तो कुछ इतनी talented लड़कियां थी but they didn't get that permission to go to co-ed college, or Punjab University or NCA somewhere. Right. So I think ये एक बहुत well needed platform था Kinnaird का. Let's come to your art and let's come to Studio RM. Yeah. तो you're a board member at Studio RM. तो वहाँ पे आपका क्या रोल है और कैसे आपने स्टार्ट किया और क्या क्या आप करती हैं? Actually, I started to assist RM in his drawing classes. वहाँ से मुझे एक बहुत एक learning aspect बहुत ज़्यादा था मेरे लिए how he teaches their basics, basic discipline. I think लोग बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन बेसिक्स फिर भी कहीं ना कहीं वीक होते हैं. सो एंड देन इट वाज मोर अबाउट आर्ट काउंसलिंग थिंग जहाँ पे आप उन लोगों को भी रीच आउट करते हैं जो बड़े कॉलेजेस या बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं और नहीं जाते हैं फॉर सम रीजन. आप मुझे मेंशन कर रही थी अपना थीसिस जो एनसीए का था. So if you can share a little bit about that. Yeah, actually it was an installation. वहाँ पे जो NCA का front courtyard है वहाँ पे एक installation थी. Bamboos लगा के मैंने ground पे तो एक ऐसा scene capture किया था जैसे धोबी घाट का scene होता है, जहाँ पे कपड़े सूख रहे होते हैं. तो those कपड़े were kind of bed sheets. उनके जो proportions थे वो single bed sheet और double bed sheet के थे. And I painted both sides of unstretched canvases. तो उसमें again वही था एक surreal image था that I'm dreaming about my next home. How it's going to be as my life is going to be changed and how it would be. So वो सारा उसमें एक idealization थी, dreams थे. And फिर उसमें कुछ चीजें थी जो मेरे अपने अम्मी अब्बू के घर से टेकन थी, इंटीरियर स्पेस. ठीक है. That's so interesting. Actually, मेरा जो फोकस रहा है ना throughout my last 20 years, I guess, वो निकलता तो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से ही है जो भी सारा है. It was about my personal thinking process, but फिर जैसे आप एंटर होते अपने मैरिड लाइफ में एंड यू फील डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस. यू एक्चुअली फेस डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस इन योर लाइफ. आई थिंक उसमें मुझे ऐसे लगता है कि साउथ एशियन रीजन की जो ख़वातीन हैं वो
mentally and physically बहुत exhaust होती हैं household chores में और Hmm. Hmm. home making चीज़ों में, you know. I'm not criticizing this, but in a healthy way as well, you know. Right. Because मेरा एक और बहुत strong point of view इधर ये है कि जैसे पंजाब की एक खातून है, you know, उसका जो एक image था early before 90s, वो Hmm. एक बहुत strong women का था through our films as well. You know, हमें जो एक message आता था वो कोई छुई मुई सी औरत नहीं थी वो एक स्ट्रॉन्ग यू नो औरत थी बिल्कुल, जो हाँ। कि लड़ती भी थी फाइट भी करती थी एंड यू नो एक अपना उसका ऑरा भी था स्ट्रॉन्ग राइट, पर्सनैलिटी थी बट राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन तक आते आते वो चीज़ थोड़ी सी सब्ड्यूट हो गई यू नो एंड हुँ, देन हुँ, वी हैव लॉट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस एंड वो एक और ही तरह का इमेज औरत का बन गया थ्रू आवर मीडिया एज वेल हुँ, हुँ, तो आई थिंक उस पे कमेंट्री बहुत एक ज़रूरी है यू नो कि हुँ। कैसे हाउ women actually carry their bodies or weight of their bodies emotionally and physically you know so मेरा जो अभी का काम है वो इसी पे है अच्छा, बिल्कुल। तो जो उसमें आप मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो बिकॉज़ we've also shared a little bit of the kind of work that you've been doing, not your thesis work, but otherwise जो आप कर रहे हो। yeah So I find it very interesting that you're actually weaving and you're making these knots and उसमें से आप ये human figures बना रहे हो. तो yeah what are those knots? वो क्या represent करती हैं जो knots आपने लगाई हैं? actually knots जो है वो बहुत you know it is actually it has started from very personal thing but I strongly feel that knots जो है वो बहुत hold करती हैं it contains memories and you know experiences हम्म and to hold yourself and you know हम्म as we have a lot of knots in our clothing and clothing is kind of our skin you know how हम्म we interact with different people तो वहाँ से ये सारा नॉट वीविंग ड्राइव है जो मैं आजकल कर रही हूँ एंड इट इज़ काइंड हम्म ऑफ अ इंटेंस वीविंग प्रोसेस बिकॉज उस पे मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े से यू नो स्वेल कर जाते हैं आई जस्ट अच्छा बिकॉज मैं जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ हम्म वो रॉ कॉटन फाइबर है thin chords हैं and they're like thick chords तो उनमें जो knot हम्म लगाना है it's kind of a you know उसके लिए एक physical gesture required है and kind of right as well तो right I think इसमें जो basic मेरा इनिशियल जो मेरी रिसर्च थी वो यही थी जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं जो सिंध में पंजाब में जो कॉटन पिकर्स हैं वो सारी खवातीन हैं and it is kind of a very laborious job. As हम्म far as men are concerned, तो उन्होंने अपने you know field वो किए हुए हैं defined. They are more into selling the product and stuff. right तो जो right सारा जो पीछे का जो सारा काम है जो the hard laborious work हाँ चीज है वो सारी हाँ खवातीन करती हैं so I'm using that material and then वो जो सारा spinning है coding है और वो जो थ्रेडिंग है उस मटेरियल की फ्रॉम हम्म रॉ कॉटन उसमें हम्म भी सारी खवातीन इन्वॉल्व हैं यू नो होम इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी हम्म पंजाब के रूरल एरियाज में सो दे डू ऑल दैट दीज काइंड ऑफ स्टफ सो right माय बेसिक इंस्पिरेशन इज फ्रॉम दैट साइड right right. Yeah, this is so interesting. I'm sure most people don't even know that cotton picking यहाँ पे हो रही है and the yeah role of and you know I don't know how you know because there are like small children are involved in cotton picking thing or women. women you know but you hardly अच्छा, see any male doing this kind of stuff okay. And you're right, it's so laborious और इतना मुश्किल काम है. it is a So difficult job yeah. you're experiencing a bit of it with these knots, right? Just Yes, जो yes. body image है, उस पे आप focus कर रहे हो. तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप share करो. Basically, you know, I made a sculpture out of paper, and that sculpture has a lot of breast shape
pieces and I joined them together. तो मुझे ऐसा लगता है कि I am focusing on the torso area of a woman body. Because I think that's the thing जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी changes हो रही होती हैं, and that's the very special area जहाँ पे आपके सारे organs और regenerating organs हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें है. एंड देन अगेन बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, व्हेन यू फीड योर इन्फेंट्स, योर चिल्ड्रन, तो वो भी एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, at the same time it is also very satisfying, that you're serving your child. All women face these issues. Yes. And there's no real dialogue about anything. You're just supposed to go with the flow, or फिर mentally जो मर्जी हो रहा हो. So, if we start thinking more about these things and, trying to express them, create a dialogue, so that is amazingly helpful in creating a society जिसमें औरतों की issues जो हैं उनको importance दी जाए. Exactly. So I think, हाँ. I mean, I was a bit hesitant and shy, because having a passive social structure, I was a bit hesitant. But then I met a great person here, and वो women abuses पे काम करती है. She's a great artist, and then she actually told me that if I'll do this kind of work, so this is also kind of a service. अच्छा, I've noticed कि आप prefer कर रहे हो सदफ to use different mediums, जरा से हट के. तो आप क्या prefer करते हो और किस medium को आप enjoy करते हो सबसे ज़्यादा? Actually, I've done painting, like, I think a lot. मैं एक trained painter हूँ, and but when I came here, though, I thought that I should learn some more things जो यहाँ की land मुझे opportunity दे रही है. So I think वो एक बहुत interesting shift था from 2D to 3D and from different kind of materials. So I did some paper making workshops, and I've learned a lot from that. And then again वो paper mache का जो sculpture making है, I did that stuff. And फिर इसमें कुछ चीजें मैंने अपने hair से भी की, because my whole concern was around women body. तो उसमें मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारा DNA contain करता है. So that was the reason I was using my own hair. And then I did some metal workshops, metal casting, and small scale sculpture, jewelry making stuff. And वो मुझे बहुत interesting लगा, because उसमें कोई limitation नहीं है किसी भी तरह की, You can go anywhere you want to. So I really enjoyed ये जो different materials के साथ experimentation थी. I think एक और reason ये भी है कि when you're a student again, तो वो एक और तरह का pressure, तो मतलब वो वाला pressure नहीं होता कि you just need to produce a certain kind of work, बिल्कुल. ये बहुत अच्छा break मुझे लगता है मिला. Right, stay, because मेरा जो gap है between my undergrad and graduate program, ये बहुत ज़्यादा, and I was a bit nervous about it, but I really enjoyed this journey to be a student again, and to behave like a student in class, and be naive with other stuff. So वो एक बहुत interesting मुझे लगा ये सारा जो पिछले मेरे 2 साल थे यहाँ पे. Great. अच्छा, अगर आप compare करो सदफ your experience here in an art school with your experience in the USA in an art school, तो कोई similarities, differences, क्या चीज stand out करती है? Yeah, actually, I also want to mention one of my advisor here, Mary Babcock, and she's my mentor. I mean, I think that I'm really fortunate to meet her here. तो वो जो डेडिकेशन है यहाँ पे एडवाइजर्स का, या जो एटमॉस्फेयर है, वो एक they don't dictate you that you have to do this. वो शायद early stages पे होता है, जो आप foundation कर रहे होते हैं, but they just give you exposure and full freedom, whatever you
want to do. And initially थोड़ा सा मुझे लगा कि I misunderstood things because जब मुझसे questions बहुत ज़्यादा करते थे मेरे teachers and advisors, why are you doing this? What is the purpose? So I used to think that okay, I'm doing something wrong maybe, But then I realized that no, it is just to they're pushing me to think more about it. Right. So Yes. yeah, that is actually the thing जो कि मुझे एक difference लगता है environment का. Because मुझे फिर दूसरा कोई I don't have here जब आप अपने अपने लोगों से दूर होते हैं तो एक ये fear भी नहीं होता कि कोई आपको judge कर रहा है whatever you're doing, तो आई थिंक वो एक खास तरह का फ्रीडम होता है एंड फिर आपको एक डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्शन यहाँ पे होता है they don't whatever they feel like themselves, they are quite open about their gender, about their masculinity or femininity, जो भी इनके internal सारी चीजें हैं, तो they don't want to hide those aspects. तो आई थिंक उसमें एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है काम करने का, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक सोशल प्रेशर ज़्यादा है पाकिस्तान में इफ़ यू वर्किंग एज एन आर्टिस्ट के आप अगर फिगर पे काम कर रहे हैं तो वो कैसा फिगर है, कहाँ एग्जिबिट करना है, ये थोड़ी सी चीज़ें अभी भी हैं वहाँ पे. बट कुछ हाँ है अच्छा बिल्कुल. से अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, गैलरीज बहुत बन रही हैं एंड people are getting more exposure towards it, but there are few things which are part of our culture and society. So I think उसमें it is worth mentioning that people like R.M. Naeem, like you, Sadaf, you have a lot to contribute because when I used to live here, when I was a student a very long time ago, before I went to America, तो यहाँ पर बहुत बहुत सैड हालात थे आर्ट के. और there were really no venues, no opportunities, hardly any place where you could actually exhibit your work. और एक अवेयरनेस भी नहीं थी, तो वो आप जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा उसमें ऐड किया है. सो the whole credit goes to RM and की जो services है वो I think बहुत ज़्यादा है इसमें, as a counselor, as an art counselor and as a teacher बहुत ज़्यादा services हैं. अच्छा, हम लोगों से कुछ शेयर करें आप about how you became a fellow of the East West Center and what it really does, because अभी आप mention कर रहे थे कि you have all kinds of people in your university, just like in most US universities. So if you can just share a bit about that. Yeah, I think East West Center ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों तक जाना, because East West Center एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे एक डायलॉग है between East and West, and they fund South Asian people. And when I was actually looking for scholarships and funding, तो आई थिंक ईस्ट वेस्ट सेंटर जो है वो एक ऐसी जगह है जो कि पाकिस्तानियों को फंड करता है विदाउट एनी other requirements. So, Right. Yeah. Or reservations. Yes. Right, right. अच्छा, तो अच्छा बल्कि लोगों को पता चलना चाहिए because I'm Yes, sure I many think people are not people aware. should apply from Pakistan because when I came here, तो उस एक साल में तो I mean last 2 years में मैं अकेली ही थी यहाँ से from Pakistan. Anything that you would like to add? Anything that you would like to offer as advice to other young women artists like yourself or students in general? Yeah. So मैं थोड़ा सा अपना फिर again personal उस पे बात करूँगी. When I was coming here, I was I was a bit concerned about my kids and stuff because but I actually have a very strong support from my family and friends as well. They are taking care of my kids. They are just uh, spending time with my kids. So ये एक बहुत I think बड़ी बात है, if you have people around you like these people around you. So but then I think मेरा यहाँ पे आना
is kind of a message. If I can do this, then every woman can do this, you know. बिल्कुल. क्योंकि मेरे लिए भी एक बड़ी चीज़ थी कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, बट इट हैपेंड एक्चुअली. सो बस यही है कि वन शुड एक्चुअली बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन बी नेचुरल, एंड अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ना भूलें एज वुमेन, यू नो. A part of mother, if you're a mother, you're a good wife, beti, whatever roles you have in you know, your structure, you're good at that, and be confident about that, you know. There's no need to say कि अच्छा अगर मैं बच्चे पाल रही हूँ तो ये कोई कम काम है. It is a big job, and you know, एक पूरी सर्विस है. So I think वो एक healthy way में रह के करेंगे तो you actually can transfer your good energies in next generation. इतना मुझे आज मजा आया है सदफ आपसे बात करके. Best of luck with the rest of your studies, and inshallah, like Naeem was telling me and you've been telling me yourself, that perhaps you will go for a PhD I afterwards, don't know. whenever Just you decide. Actually, thank you so much, and take care of yourself. thank you so Uh, much. Okay, Khuda Hafiz and take care.